रेडी। पहले कुछ वर्ड नोट डाउन करेंगे और उससे पहले मैं आपको जस्ट एक बात बताऊंगा कि आपको अगर प्रिपरेशंस करनी है तो पूरे मन से करनी है। आप सिर्फ फॉर्मेलिटी टाइप से कंटेंट को कवर नहीं करेंगे, आपका काम है स्किल को क्वालिफाई करना। इस बात को सोच के कि मेरे मार्क्स कम है कंपेरिजन करके दूसरे बच्चे से, अपने स्किल को ख़राब नहीं करेंगे। आपका बस एक ही ऑब्जेक्टिव है, स्किल क्वालिफाई होना चाहिए। और स्किल क्वालिफाई तब होगा जब अपना 100% दोगे। ये सोच के कि कट ऑफ क्या रहेगी, आप लगे भी हुए हो और लग भी नहीं रहे हो, ये गलत तरीका है। आप तैयारी करो, पूरे मन से करो। स्किल क्वालिफाई होगा तो कॉन्फिडेंस का लेवल वैसे ही हाई होगा आगे की चीज़ों के लिए। जिनके बच्चों के मार्क्स थोड़े से कम है, हमारा ऑब्जेक्टिव है फिलहाल स्किल क्वालिफाई करना, ना कि फाइनल सिलेक्शन को देखना। अगर फाइनल सिलेक्शन को देख के आप स्किल में बैठोगे ना, आपके ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर रहेगा दूसरे बच्चों से ज़्यादा। हमारा पर्पज जो ऑब्जेक्टिव होता है, मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जो हमने लिखा उसको टाइप कर दिया और वो एक्यूरेसी के साथ में, प्रिंट आउट के साथ में क्वालिफाई कर लिया। दो क्राइटेरिया आपके पास में, एक 80 का, एक 100 का। जिनका 80 का क्राइटेरिया है उनकी टाइपिंग स्पीड 35 से कम नहीं होनी चाहिए। मैं नेक्स्ट ट्यूसडे को टेस्ट लूँगा इसका, सभी का, पहले आते के साथ ही। जो बजे 9 बजे आएंगे नीचे टेस्ट देते हुए आएंगे, प्रिंट निकाल के लेके आएंगे। हर ट्यूसडे को टेस्ट देंगे वो बच्चे जिनकी स्पीड फर्स्ट बता दूंगा, मार्क कर लूँगा आपको। आपका मैं रोल नंबर नोट डाउन कर रहा हूँ। जो जो बच्चे COD में क्वालिफाई हुए हैं या डी में क्वालिफाई हुए हैं, सबका टाइपिंग स्पीड कितनी है, एक्यूरेसी कितनी है। आपके दो टारगेट हैं, एक 98% एक्यूरेसी के साथ 35+ डी ग्रेड वालों के लिए, एक 45 और 99% एक्यूरेसी के साथ में। ये टाइपिंग के टारगेट है। ये 100% आपको लेके ही चलने पड़ेंगे अगर आप COD दोनों में क्वालिफाई हुए हो। भले ही फिलहाल आपकी स्पीड 80 क्यों ना हो या 80 से कम क्यों ना हो, लेकिन आप टाइपिंग को साइड में नहीं रख के चल सकते। आपका कंटेंट टाइप नहीं हो पाएगा वहाँ पे। और मैं नहीं चाहता कि आप इतनी सारी मेहनत करो और फिर वहाँ पे कंटेंट टाइप ना हो। दूसरा, आपको जो सॉफ्टवेयर एक्सेस मिल रहा है, आप इसको यहीं पे नहीं, घर पे भी कर सकते हो। देखो, ये मिनिमम क्राइटेरिया होता है कि इतना करना है। मैक्सिमम के लिए किसी की लिमिट नहीं है। हर बच्चे की अपनी अपनी भूख है, अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है। जिसको जितनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है उतनी प्रैक्टिस कर सकता है। 528 केसी पड़ी हुई है इसके अंदर। हालांकि उसके अंदर जो ऑडियो है वो अभी AI की फॉर्म में पड़ा हुआ है। शुरुआत की ऑडियो में रिप्लेस करवा दूंगा लगभग 2 वॉल्यूम तक की, धीरे धीरे वो सारी रिप्लेस हो जाएगी। फिलहाल AI फॉर्म में ऑडियो है। ऑडियो आप कहीं से भी ले सकते हो, लेकिन उसका जो फाइल है वो एज इट इज़ फाइल है जो केसी के अंदर फाइल है। विद कोमा और नो कोमा दो फाइलें हैं। स्टार्टिंग के लिए आप नो कोमा यूज़ कर सकते हो अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए, लेकिन बाद में आप विद कोमा वाली फाइल ही टाइप करेंगे। SSC कोमा की मिस्टेक काउंट नहीं करता। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोमा लगाने पे आपको गलत कर देता है। जो इसेंशियल कोमाज है वो लगने चाहिए। ये एक ऐसी हैबिट है, अगर आपने एक बारी छोड़ दी कोमा लगाने की, ये लग नहीं पाएंगे। कोमा कभी भी डिक्टेशन के टाइम पे नहीं लगता। कोमा हमेशा टाइप करते टाइम पे लगता है। डिक्टेशन के टाइम पे सिर्फ फुल स्टॉप का गैप लगता है। हालांकि कुछ बच्चे लगा लेते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करता, क्योंकि वो स्पीड को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करता है। आप फुल स्टॉप लगा सकते हो, लेकिन स्मॉल कैपिटल और कोमा हमेशा टाइप करते टाइम भी लगाना है। तो तैयारी होगी पूरे मन से, अधूरे मन से नहीं होगी। असाइनमेंट के रूप में 2 तरह के असाइनमेंट है। एक तो वीकली आपको केसी रिव्यू के नाम से, जो कि आपको ऑलरेडी सारी आउटलाइन लगभग उसकी आती है, केसी का कंटेंट है, उसको सामने आउटलाइन बनाने के लिए स्पेस होता है। दूसरा आप करेंगे स्टार्ट, जो भी बच्चे लगभग जो है सारे रिव्यू इस असाइनमेंट साथ साथ करते जा रहे हैं, या 7 असाइनमेंट साथ साथ ही है लगभग, वो एक असाइनमेंट और ऐड कर सकते हैं अपने अंदर। कॉमन वर्ड के नाम से रहेगा। मैं मान के चल रहा हूँ कि 26 जनवरी के बाद एग्ज़ाम हो जाएगा। हालांकि मार्च भी एक्सपेक्टेड लग रहा है, लेकिन 26 जनवरी के बाद मैं चाहता हूँ हर बच्चा जो है वो 26 जनवरी तक अपने स्किल को तैयार कर ले। अगर C और D दोनों क्वालिफाई है तो दोनों तैयार कर ले, और D क्वालिफाई तो D तैयार कर ले। तो तैयारी का लेवल होमवर्क के साथ में, एक्यूरेसी के साथ में इस लेवल पर रहेगा कि आप एग्ज़ाम को कन्वर्ट करेंगे। पहले क्या होता था, हम मैनुअल टाइप करते थे। मैनुअल टाइप करने में क्या होता था, कुछ एडवांटेज थी, लेकिन समय ज़्यादा लगता था। अब आपके पास में समय नहीं लगता है, आप टाइप करते हो, आपका रिजल्ट आ जाता है। लेकिन उसके बावजूद अगर आप गलतियाँ नहीं देखोगे और उन गलतियों पर काम नहीं करोगे, तो जो बचा हुआ समय है वो किसी यूज़ का नहीं बचेगा। डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट करना है हमें। अगर हम 80% पे पहुँच गए तो 85 पहुँचना है, 85 पहुँच गए तो 90 पहुँचना है। ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक ही है, 90+ एक्यूरेसी रहे जब आप टाइप करो। वर्ड लगभग पूरे रहे। पूरे का मतलब है 2-4 वर्ड छूट गए तो कोई बात नहीं, लेकिन लेस देन 5। और मिसरीड ना के बराबर होते हैं। स्मॉल कैपिटल आप डे बाई डे इंप्रूव करते चले जाते हो,
कोमा वगैरह को जैसे जैसे आप ऑब्जर्व करोगे ना कि आज मेरी ये क्वालिटी है, कल नहीं होने दूंगा, तो वो धीरे धीरे कवर होने लगती है। तो फोकस रहना। इसके अलावा आप जो भी है, जिसका भी एग्जाम जो मुझे एक बार नोट डाउन करा देंगे कि कौन सा एग्जाम क्वालिफाई है रोल नंबर के साथ में। अलग से किसी को प्रॉपरली गाइडलाइंस चाहिए वो पूछ लेगा, एक एक करके, दो दो करके पूछ लेगा। वीकली आप सारे असाइनमेंट सबमिट करेंगे, पीछे नहीं रहेंगे आप किसी भी असाइनमेंट को लेकर। ये असाइनमेंट धीरे धीरे इंप्रूवमेंट करते हैं, आपको कॉन्फिडेंस देते हैं। ये असाइनमेंट क्या करते हैं, आपको क्या करते हैं, आप अनसीन जो कंटेंट होता है, जो आपको नहीं पता होता, जो आप उनको तैयार करते हैं। आपको कॉन्फिडेंस देता है कि मैं बिना आउटलाइन देखे भी आउटलाइन बना सकता हूं। रेडी? कुछ वर्ड लिखेंगे, उसके बाद डिक्टेशन लिखेंगे। कल वेडनेसडे है, 109 तक कोशिश करेंगे स्टार्ट करने की। आज भी मैं लेट हूँ, 109 के आसपास स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कल डिक्टेशन थोड़ी ज़्यादा होती है, एक साथ 5 डिक्टेशन होगी, तो 109 तक लगभग कोशिश करो कि आ जाओ। I have been, I have not been, I have the honor, I have great pleasure, I may tell you, I may be, I may not be, I might be, I might not be, I'm glad that, I'm glad to know that, I may have been, I may not have been, I am in a position, I am not in a position, I am informed, I will be, I will have, I will not have, I will be glad, I will not be able to, I will say, I will not say. I have not, साइज छोटा हो जाएगा। I have been, पूरा रखेंगे साइज। I have not been, I have not been, I have the honor, द को ओमिट भी कर सकते हो। I have great pleasure, I may tell you, I may be, I may not be, I might be, हुक नहीं आएगा, आई लगा देते हैं ज़्यादातर, माइट इजीली पढ़ा जाता है। आई माइट नॉट बी, हुक आएगा इसके अंदर। आई एम ग्लैड दैट, आई एम ग्लैड टू नो दैट, I may have been, I may not have been, I am in a position, I am not in a position, I am informed, I will be, I will have, I will not have, I will be glad, I will be able to, I will not be able to, I will be able to, सॉरी, एबल को ऑफ करेंगे, ग्लैड कर दिया था। I will not be able to, I will be able to, I will say, I will see, I will not say, लिखो वर्ड। I have been, I have not been, I have the honor, I have great pleasure, I may tell you, I may be, I may not be, I might be, I might not be, I am glad that, I am glad to know that, I may have been, I may not have been, I am in a position, I am not in a position, I am informed, I will be, I will have, I will not have, I will be glad, I will not be able to,
आई विल नॉट से, पहले 100 पे लिखेंगे स्पीड पे और फिर आप लिखेंगे 80 पे, और जो ये टेस्ट अवेलेबल होगा आपको, यूआरएल सेम है 3pprogramme.steno18.in, और टेस्ट होगा SSC C D ग्रेड टेस्ट 53 YouTube @100, और दूसरा होगा @80। दूसरा इसके अंदर 100 टेस्ट पड़े हुए हैं टाइपिंग के, आप सेल्फ प्रैक्टिस के लिए उसको यूज़ कर सकते हो। इसी में जैसे आप स्टेनो पर क्लिक करते हो, यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट के नाम से भी होता है, उसमें आप 100 टेस्ट की प्रैक्टिस कर सकते हो अगर चाहते हो तो करना। रेडी? Start it. The crux of the whole matter, therefore, is the inability on the part of the government to manipulate the prices in a manner whereby it may be possible to achieve crop planning in order to achieve the desired results. As long as this price structure is allowed to move in the manner in which it is moving today, whatever may be the policy of the government, howsoever much credit they may pump into the agricultural sector, whatever the amenities they may give to the agriculturists, it will not be possible for us to achieve the targets in the manner in which we want to achieve. I would have been satisfied if as a result of this increased agricultural production, the farmer was better off. But we find that whenever there is increased production in response to higher prices, the markets slump down so heavily that ultimately the farmer stands to lose instead of to gain. Therefore, the farmer loses both ways and the country also loses. The farmer puts in more money, more resources in the production of crops for which he expects higher returns, and he loses all that money because the prices are not rising to his expectations, and instead the prices fall down rather precipitously, and the country is also losing because there is a very uneven development of agriculture. Therefore, the crux of the whole problem is not just to hold the price line or just to see that black marketing is avoided. That is only one part of the job, a very important part of the price policy, and that has got to be kept in mind. I am not against it. In fact, I am all for it, and I blame the government for not being able to do it so far. But this is another aspect of the price policy to which the Planning Commission, it seems to me, has not applied its mind properly so far, namely the use of price policy as an instrument of crop planning, and as long as that particular tool is not utilized for this objective, it will not be possible for us to have a planned development of our economy. Then there is the question of incentives. We are now told every time that unless incentives are given, it will not be possible for us to develop our economy. We are hearing daily about our export promotion. Now, the problem of incentives also has to be viewed in terms of the
objective of the development of a socialist economy in our country, and not just from the point of view of earning more and more foreign balances. I am not in any way belittling the problem of foreign balances, but ultimately the problem of foreign balances has significance and meaning only in terms of the objectives that the 10th plan has set before it. Therefore, when we are talking of incentives in order to earn more foreign balances, we have also to think of incentives in terms of achieving the objectives that we have got in mind. I was therefore disappointed to read the speech of the planning minister, as he said as the planning minister at the Indian Labour Conference, in which he seems to have indicated a new approach to the problem of wages. His approach has passed through 3 stages. In the first stage, just after the general election, the planning minister came out with a statement that he was thoroughly dissatisfied with the way in which the wage structure had developed and that he meant to do something about it. He categorically stated that the real wages had not increased because of intra-signance of the management, and he further stated that he wanted to do something about it. Then there came about a discussion as to what could be done, and all the industrialists themselves and the financial newspapers in this country came out with the theory that wages could be increased only if productivity is increased, and therefore wages should be linked with productivity. That was the second stage, namely increase productivity and wages will be increased. That was the slogan, or that was the principle which was accepted even by the industrialists. But what do we find in the speech of the planning minister to the Indian Labour Conference? There he says that even if productivity increases, the first charge will be in respect of projects which are meant for further employment or creation of more employment opportunities. That means even if productivity increases, it is not that the workers will immediately benefit in terms of higher wages, so that it may be possible for them to improve their standard of living a little bit. Even if productivity rises, the fruits of productivity will go to schemes for creating further employment opportunities in the country. How long are the workers to wait, and what exactly will be the stage at which it can be stated that enough employment opportunities have been created, and therefore the stage has come for increased wages? Madam, you are aware that when this life business was nationalized in the year 1956, great expectations and great hopes were entertained by all members of Parliament. In the statement of objects and reasons relating to that measure, the Finance Minister stated that nationalization was necessary and even
imperative to achieve the broad objectives of increasing insurance business, to take it to larger areas, including the rural areas, and to give greater returns to policyholders. We have to see after these few years of the working of this organization how far we have achieved these great objectives. In the past also, we may remember that many criticisms have been made in regard to the working of this organization. Even the estimates committee has gone into this question and examined in detail the various aspects of the working of this organization. That committee has made certain recommendations. Those recommendations are very important and I will advert to them shortly. Before I deal with them, I wish to make one point clear. In spite of the various criticisms and in spite of the various comments made in the House, in the press, and also through various organizations, the working of this organization has not been improved very much. 100 की स्पीड है, फ्लक्चुएशन 110 तक का है, फुल स्टॉप का प्रॉपर गैप दिया गया है और आपको पता है कि कहीं भी स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस आता है तो उसका फर्स्ट लेटर क्या बनाते हैं? कैपिटल. ऑफ को छोड़ने के बाद जो नाम आते हैं प्राइम मिनिस्टर हो, फिनेंस मिनिस्टर हो, उसका भी फर्स्ट लेटर कैपिटल बनाते हैं. इन चीज़ों को आप टाइप करते टाइम पे ध्यान रखोगे. आप नेक्स्ट लिखेंगे 80 की स्पीड को फोकस करते हुए. रेडी? Start it. Without being modest, I may narrate to the House one experiment that we had tried in the railways to check and monitor the performance of the railways. In 2007, I tried to introduce a new idea of not only projecting the budget for the entire year, not only the revenue and expenditure for the entire financial year, but I had split up the budget in advance into 12 minimum budgets, revenue and expenditure for each month, and targets were fixed. Every month we went to the 9 zones, tried to sit with all the concerned officers and try to find out whether the targets for expenditure and revenue in particular were fulfilled, because all the months are not identical months. For instance, when crops are cut, the food movement will be better. When sugar is manufactured, the movement of sugar will be better. Therefore, all months not being prosperous or lean months, we had broken up the entire budget into 12 parts. Every month we try to monitor. Fortunately, my experience was that in the first budget of the railways, I had projected a surplus of the order of rupees 80 crores, and at the end of the year I was able to get a surplus of rupees 126 crores as a result of monthly monitoring
that had taken place. Now, we are trying to introduce a quarterly monitoring of our governmental expenditure as also of the revenue mopping up, so that we will be able to maintain the deficit at a lower level, and we are sure we will be able to do the job. Then there is black money of the order of rupees 40,000 crores that has also an inflationary impact on the entire price structure. The depletion of foreign exchange reserves also makes the import of the essential commodities in times of scarcity very difficult. These are problems that have created difficulties. We have taken note of the fact that excess liquidity has to be checked. I was happy that Sri Vasant Seth specifically referred to this point. He was right in saying that the money supply had increased in the previous year, and as a result of that, when the money supply will increase and there is an excess liquidity, all steps will be required to check the excess liquidity. We have already seen that the statutory liquidity ratio, which actually represents the ratio of the total bank investment in government securities divided by the deposits in the banks, has increased. I am sure that this increase in the statutory liquidity ratio will help us to some extent in the long run for checking the excess liquidity and also the constraints and inflationary pressures on our economy will be decreased to some extent. I am referring to a problem which was mentioned by a number of members. The consumer price index gives you a correct indicator of the behavior of prices. Why is it that all the official documents refer to wholesale price index? I am not referring only to this government, but all the governments in the past also. Why is it that they had been quoting the wholesale price index more? There is only a technical and administrative difficulty. As far as wholesale price indices are concerned, a week-wise tabulation is available. But sir, the consumer price index for urban, rural and all sections is not available week-wise. The consumer price index is monthly and not weekly. The wholesale price index is available on a weekly basis, and a bigger time lag in consumer price index is there. And as a result of that, although one does not desire to make reference to the wholesale price index
Yet for regular and periodical behavior of the prices, we have to take recourse only to quoting the wholesale price index. But I concede the point of the critics that it is not the wholesale price index that correctly gives a picture of rising prices. It is the consumer price index that does it. Therefore, if you take the consumer price index, you will find that the position is worse than what was indicated by the wholesale price index. But I am not quoting the wholesale price index only to drive below the carpet the real price situation. It is only because of non-availability of details at many places that I was forced to quote the wholesale price index. Now, I would like to refer to certain sensitive commodities. First, let us take up sugar. Everyone in this house knows that the price behavior of a commodity is directly linked up with a number of factors, starting with the production pattern of that commodity. Secondly, we have to see whether there is hoarding of that commodity. Thirdly, how does the distribution take place, and if there is a dual price, what are the quotas distributed to the levy section and non-levy section. Now we addressed ourselves to the problem of augmenting the sugar production. 80 की स्पीड है, फुल स्टॉप का प्रॉपर गैप है, फ्लक्चुएशंस 5 की है, 800 प्लस वर्ड है. अगर अच्छा लिखा टाइप करेंगे, अदरवाइज आप सीन कंटेंट टाइप करेंगे, उधर लिखेंगे डिक्टेशन सीन कंटेंट की.